आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार के राजनीतिक अनाचार की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर उन्हें बाबू सरकार के काले कारनामों से अवगत कराया। वाईएस जगनमोहन ने ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति को अवगत कराया कि किस तरह आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, साथ ही संवैधानिक नियमों और परंपराओं की तिलांजलि दे रहे हैं। दरअसल दल बदल कानून के तहत विचाराधीन मामलों वाले विधायकों को चंद्रबाबू नायडू ने मंत्री बना दिया है। इस पूरे सियासी खेल में विधानसभा अध्यक्ष की भी मौन सहभागिता है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मीडिया को मामले की पूरी जानकारी दी। We've met the Honorable President. We've given him this representation. We've explained to him the situation in Andhra Pradesh, wherein 21 of the MLAs belonging to YSR Congress Party have been lured by the Telugu Desam Party, and all these 21 MLAs who've shifted over have not been disqualified for the past one whole year. It's been more than a year and their disqualifications are pending with the Speaker. The Speaker sits on it, he doesn't react. While these MLAs who've been elected on YSR Congress Party, deformed YSR Congress Party ticket, who have no moral right to continue as MLAs, are continuing as MLAs because of the support given by the government there, because of the support given by the Speaker there. While their disqualification pending, while their disqualification petitions remain pending, the Chandrababu Naidu government had gone one step ahead and mocked democracy furthermore, taking 4 of these MLAs into his cabinet. Without these people resigning from their MLA posts, without these people being disqualified, these people continue to be MLAs from YSR Congress Party, and yet they have taken an oath as ministers in Chandrababu Naidu government in Andhra Pradesh. This is mockery of democracy what is taking place. In fact, Chandrababu Naidu is in government now. He's got power with him, he's got money with him, he's got police with him, he's got everything what the power can give him. Yet this man is not willing to have these MLAs disqualified. Yet this man is not willing to have these MLAs resign and take these take these MLAs, give them tickets on his party ticket and take them to people and then win people's mandate. Because Chandrababu Naidu knows very well that he is going to lose elections if he is going to take these people to people, because his governance in Andhra Pradesh has utterly failed. He does not have confidence in himself. He does not have confidence in his governance. That is the reason why he wants these MLAs, but yet he doesn't want these MLAs. He wants these MLAs, but he doesn't want these MLAs on his ticket. This is utter mockery what is taking place in Andhra Pradesh, utter mockery of democracy what is taking place in Andhra Pradesh, and we are questioning that. जगनमोहन के ज्ञापन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। वाईएस जगनमोहन की दलील है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले दल बदलने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग से संबंधित दायर याचिका स्पीकर के सामने लंबित है। ऐसे में इन्हें मंत्री बनाना कतई जायज नहीं है। इस तरह दल बदल को प्रोत्साहन मिलेगा और गलत सियासी परंपरा की नींव पड़ेगी। वाईएस जगनमोहन ने साफ कहा कि वाईएसआरसीपी के साथ जो कुछ हुआ वो कल दूसरी पार्टियों के साथ हो सकता है। खासकर जिस तरह से धन बल के जरिए चंद्रबाबू दूसरी पार्टी खासकर वाईएसआरसीपी के नेताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी समाचार।